हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक मॉर्निंग सेशन के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। आफ्टरनून सेशन के भी आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जॉइन इन आफ्टर प्रॉब्ली 10 मिनट्स 15 मिनट्स, तो वो अपना फीडबैक थोड़ा बहुत दे सकते हैं। आफ्टरनून सेशन का जो भी एनालिसिस है वो रात में होगा, प्रॉब्ली समवेयर अराउंड 8 और 9, जब भी टाइम निकलेगा। जैसे ही पूरा पेपर हमारे हाथ में होगा हम उसका पूरा एनालिसिस आपके सामने कर देंगे। So don't worry about the afternoon session as well. This session is specifically for the morning session guys. जो भी morning session के हैं उनका एनालिसिस मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। मेजर एनालिसिस जीके का होगा, ऑफ कोर्स दैट गोज़ विदाउट सेइंग। उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में। एज यू ऑल नो दैट ऑल दीज क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड, देयरफॉर GK is of course very accurate, highly accurate, but quant, reasoning and English are purely based upon the feedback given by the students. And yes, the students, it is not possible humanly to remember the entire question in quant, reasoning or English because they're long questions. Therefore, I will be discussing the idea of the question and the topic from where that question was asked. Okay, so that is going to be my objective here in this session with you, to discuss as many questions as possible of whatever came in the morning session in the examination. Just give me a thumbs up and let me know if you can see me and hear me clearly, and then I will start immediately with the analysis of the paper. Okay. Harshu is saying I was at the center, but he could not spot me. I was trying to be spotted because I wanted to talk to as many students as possible, but I think बहुत सारे students नहीं कर पा रहे थे मुझसे बात, but it's okay. I'm here now. Just give me a thumbs up and let me know that everything is fine, because last night we had a session and the voice was breaking, and that was a blunder. I don't want the same thing to happen again. Okay, let's talk about the cutoff first. I think that's very important. Having a look at the paper, I feel it's yes, certainly much easier than the last time, number one. Secondly, everyone was better prepared, so that will also have an impact on the cutoff. Last time it was uh, you know a bouncer for all the students, but this year they had practiced more. They knew that the paper can be more difficult. Even we were more vigilant about the level of the paper, therefore the cutoff might go up because of that as well. So it can go up by anywhere between 20 to 30 marks. That is my feeling based upon the morning paper. If we have a look at the afternoon paper and then we try and put in normalization as well, I think somewhere the spike can be somewhere between 20 to 25 marks. Last year it was 66, so I think somewhere around 90 that can be there, but it's just a hinge at the moment. Okay, जब इवनिंग सेशन आएगा, आफ्टरनून सेशन आएगा, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वी विल हैव अ मोर क्लियर आइडिया. ओके, और एक दो दिन में और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है व्हेन वी टॉक विद मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी क्या है, 10 15 20 स्टूडेंट से 100 स्टूडेंट से मैक्सिमम बात कर लिया, उससे एक बहुत बड़ा आइडिया नहीं लग पाता है. ओके, सो आई वॉन्ट टू हैव अ कंप्लीट आइडिया, बट आई थिंक 2025 इंक्रीज हो सकता है, दैट कैन हैपन. ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. कुणाल कौशिक थोड़ा माही सिंह, पहला बंदा कौन था जिसे पेपर इजी लगा था? यस, आई थिंक सी दैट हैपन्स, दैट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज़, बिकॉज नॉर्मल सी बात है कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है, और अगर मैं 10 20 50 100 स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूँ, द सैम्पल साइज इज़ टू स्मॉल फॉर मी. ओके, बट जीके के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली easier than last time, more factual, yes, so it might increase, the cutoff might increase based upon GK alone. It was not easy, but it was not lengthy when I'm talking about GK. Okay, it was not that easy. That's what I'm saying. Jyoti saying the same thing. It was not easy, but it was not lengthy. Okay, तो इसीलिए थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जा सकती है. लास्ट ईयर वॉज अ डिज़ास्टर फॉर एवरी वन, एंड इवन देन द कट ऑफ वॉज 66.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो in that scenario,
कंसिडरिंग दैट वी वर ऑलरेडी बेटर प्रिपेयर्ड, तो 10 नंबर वहाँ बढ़ जाएंगे हमारे। 65 66 प्लस 10 76 तो यही हो गए अपने। ओके, और 10 नंबर और बढ़ा लो तो 86 तो अपने यहीं पर निकल जाएंगे। आई थिंक उससे कम तो जाना मुश्किल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। 1 सेकेंड। परफेक्ट, तो आई हैव योर chat here with me. चलिए, let us start. Okay, I will be starting with GK. I think I have 71 to 72 questions, not the entire 80, but I think काफ़ी रहेंगे इतने questions भी। जो भी क्वेश्चंस बचेंगे आप वो लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, और मैं वो ऐड कर दूंगा। द PDF ऑफ दिस हैज़ ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद यू गाइज इन दी टेलीग्राम चैनल एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप। सारे ग्रुप्स सारे हमारे चैनल्स पे डाल दी गई है, सो यू कैन एक्सेस द PDF फ्रॉम देयर डायरेक्टली एज वेल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ। ये पहला क्वेश्चन था, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, वेरी इरेलीवेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऐसा नहीं है आज लिखी है ये बुक, काफ़ी पुरानी बुक है, सो पता नहीं क्यों पूछा है, बट एनीवेज इलॉजिकल क्वेश्चन, बट द आंसर वाज LK आडवाणी। हु इज़ दी गूगल पॉलिसी हेड ऑफ इंडिया, अर्चना गुलाटी। रीसेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक ये तो स्पॉटलाइट में मिलेगा, अड्डा में मिलेगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको, सो आई डोंट थिंक दिस वॉज अ प्रॉब्लम, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, third question, Singareni coalfields are located in which state? Now, there are two sets of students. One set of students are saying that the question was Singareni coalfields is jointly owned by Government of Dash and Government of India. And the second set of students are saying no, the question was different. It was Singareni coalfields are located in which state? दोनों का आंसर तेलंगाना ही है। डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा होगा क्वेश्चन में, देन इट वुड हैव बीन भद्राद्री कोठागुदेम डिस्ट्रिक्ट, तो ये उसका डिस्ट्रिक्ट होगा। ओके, fourth question, delimitation has happened in which state recently? The answer is Jammu and Kashmir. If I'm not wrong, मनीष सर has already covered delimitation. PIB में उन्होंने थोड़ा सा उठाया भी था, डिटेल में बताया था कि delimitation में क्या क्या होता है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, नथिंग एल्स। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल नहीं था। इवन बाय एलिमिनेशन यू कुड हैव गॉट टू द आंसर, बिकॉज JNK में हुआ है जो भी हुआ है, और कहीं पे कुछ हुआ नहीं है, सो इट वाज अ सिंपलर क्वेश्चन आई वुड से। लॉजिक से भी कर सकते हो इवन इफ यू नॉट रेड इट। फिफ्थ क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज द विनर ऑफ संतोष कप। Obvious question, it was there in all the current affairs everywhere, so the answer is Kerala. Simple question. Who is the runner up of Pro Kabaddi League held recently? Patna Pirates. The question might have been framed in another manner, as to some students are saying that it was framed like Delhi beat Dash in Pro Kabaddi League finals this year, something like that. Okay, even then the answer remains the same. So the runner up was asked rather than asking the winner. That was a little surprising, but I would say students were saying that it was an easy question, they knew it. Question 7, in which year was Federal Reserve established in USA? A very difficult question, not expected. Static GK में भी नहीं मिलेगा आपको. In fact, I was checking Manorama in this afternoon, और वहाँ पर भी I could not find it anywhere. It's a thick book, so of course I was not perfect in reading out the entire Manorama, but I could not find it in economy session. So a difficult question, I would say. Question 8, what is the ratio of ownership in an RRB by states, center and sponsor banks? Not sponsorship banks, sponsor bank. Okay. Now there are two things here, that's where students get confused, and I would like to clarify it very briefly. The ratio or the ownership ratio stays the same, 50 15 35, but as per 2015 Amendment Act of RRBs, it said that the center and states combined ownership can be reduced to 51% by asking the state first, of course, plus the sponsor can hold 15% minimum, and the rest can be raised from the market. तो ये change हो सकता है, but this is something that can be done and not something that is. Okay, this is what can be done. So the ownership structure stays the same, but there is a flexibility now, because now RRBs are given the permission to raise money from the market as well, and this is how they can raise money from the market. Okay, I hope it's clear now. Question 9, which of the following is the correct allocation of PM Kisan in the recent budget?
68,000 crore was the answer. Simple question. हमने कराया भी हुआ है आपको ये schemes में. I think it was a cakewalk for everyone. Where is Louvre Museum located? Something that you will not find anywhere, but something that you will find everywhere in the movies. बहुत सारी movies हैं, especially movies by Tom Hanks, not only Da Vinci, बहुत सारी movies हैं जहाँ पे Louvre has been shown. So Paris, France was the answer. Simple question, I would say. Based on current, not current affairs, based upon your general awareness, your general knowledge. According to NFHS 5, what is the male to female ratio in India? I'm not sure if this was the exact question, but yes, they had specifically asked what is the male to female ratio in India, and it is 1020 women for 1000 men. Okay, anomaly, something which is unacceptable by a lot of countries. That's why this question was probably asked. Question 12. According to the latest State of Words Forest report, what is the percentage of word forest cover? The answer is 31%. A simple question जो कि करंट अफेयर्स में था. नाउ जो मैंने बोल्ड किए हैं क्वेश्चंस जो हाईलाइटेड दिख रहे हैं आपको, दीज आर द क्वेश्चंस विच आर नॉट क्लियर. Okay, so question 13 as per a student was, what is the venue of environmental conference to be held in June 2022? अभी कौन सी environmental conference की बात कर रही हैं, इसीलिए ये confusing हो जाता है question. See now AK Singh is saying there was no option 1020 and 1000. तो अगेन ये कंफ्यूजिंग हो गया कि अगर 1020 नहीं था देन द क्वेश्चन माइट हैव बीन डिफरेंट. ओके, नाउ देयर वर टू क्वेश्चंस, मेल टू फीमेल अलग था और रूरल अर्बन अलग था. वो सेक्स रेशो पे था, दिस इज मेल टू फीमेल, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. सेक्स रेशो इज द चाइल्ड सेक्स रेशो एट बर्थ, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, वो भी मैं डिस्कस करूँगा. ओके, एंड मेल टू फीमेल इज ग्रोन मेन एंड वेमेन, वो अलग है क्वेश्चन. ओके, now this question, if you can figure out and tell me what exactly were they asking, the venue of environmental conference, which conference were they talking about, that is not clear. So I'm skipping this question, question 13. We can probably discuss it later when whenever like we're more clear about it, or you can put it in the chat box. Question 14. The first food grain based ethanol factory is situated in which state? The answer is Bihar. Question 15. On which day is the coal miners day observed? 4th May. These are very simple questions. I think ये तो केक वॉक हैं आप लोगों के लिए, कभी भी कर सकते हो. This was a difficult question and still a confusing question because even Google does not have clear answers to this question. T+1, which is a settlement system in the stock markets, was implemented by which country for the first time? कौन सी country ने first time introduce किया था T+1? Some students are saying China, some students are saying Singapore. Okay, दोनों students अलग अलग बोल रहे हैं. Question 17, question on Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, which is PM Swanidhi. तो PM Swanidhi पे कुछ question पूछा गया था, वो आपको बताना था. The question is not clear कि exactly क्या पूछा था, but it is expected कि statement based questions पूछे गए थे, statement based आपके options थे from PM Swanidhi. बट द स्टूडेंट्स वर सेइंग कि बहुत सिंपल था, आराम से वो PM स्वानिधि के बारे में सब कुछ जानते थे बिकॉज मनीष सर हैड टॉट इट, तो बता पा रहे थे. इन बजट 2022 क्वेश्चन 18, हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड टू जल जीवन मिशन? द आंसर इज 60,000 crore. क्वेश्चन नंबर 18, वेरी सिंपल क्वेश्चन. Question 19, repo NCRR has been revised recently by RBI. On which date was the revision made? Some students are saying 4th May, some students are saying 21st May. आप लोग खुद क्लैरिफाई कर सकते हो बहुत ईजीली. ये भी क्लियर नहीं है कि रेपो रेट की बात हो रही थी या CRR की बात हो रही थी, सो दैट्स अ कन्फ्यूजन. बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग द रेट कि रेट भाई अब कितना है, दे जस्ट ट्विस्टेड इट एंड आस्क्ड यू द डेट. आई थिंक इट्स एन इलॉजिकल डिस्टिंक्शन, इलॉजिकल twisting that they've done, but this is how exams are nowadays and you have to try and remember all the things that you can. But yes, instead of asking you the rate, they asked you the date. Okay, the World State of Forest report is published by which country or which institution or organization? The answer is UNFAO, Food and Agricultural Organization. Very simple question. Question 21, what is India's rank in global fish production? Now I got the data of 2019-20. Some students are saying the answer is third largest, but 2019-20 का अगर डेटा देखेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट है. इकोनॉमिक सर्वे में हो सकता है थर्ड लार्जेस्ट बोल के लेटेस्ट डेटा भी दिया हो. ओके, बट बेस्ड अपॉन न्यूज़ आर्टिकल्स
based on the data of 1920 with a production of 14.16 million metric tons. India is the second largest fish producer. Okay. Okay, so Hitesh has clarified it from which date it was implemented. So what he's saying is it has been revised recently. From which date has it been implemented? That makes sense. ये change हो गया अभी question. Okay, I hope it is clear now. Okay, so ये हो गया question 22. What is the relationship between bond yield and rates, yield और rates and prices? ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, 1000 बार मैंने बताया होगा कि इन्वर्स रिलेशनशिप होती है और वो क्यों होती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. तो ये क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फेज़ 2 का क्वेश्चन था जो कि फेज़ 1 में पूछा हो गया. Asim portal is related to what, or which ministry is responsible for Asim portal? That was the question. Some students are saying the ministry was asked, some students were saying that the objective was asked. Okay, so the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, MSDE, has launched Asim portal to help skilled people find sustainable livelihood opportunities. So this was the question, question 23. Question 24, one second guys. Let me just block this. Okay, let's come back. DAYS portal, question 24. In DAYS portal, E stands for what? The answer is Excellence, Dr. Ambedkar Centers of Excellence. Okay. Question 25. OECD was established in which year? 30th September 1961. Static GK में covered है ये चीज़. Okay. Establishment year of BIMSTEC was also asked. A lot of questions from international relations directly or indirectly. ये questions पूछे गए थे. ठीक है. So question 26, establishment year of BIMSTEC, 6th June 1997. Okay. Largest geological park, this is what I got. I don't know what was the exact question. If you can, members in EOCD was a different question. Okay, somebody is saying members in EOCD. Some people are saying that there were two questions based on EOCD. One was establishment year and another was number of members. Okay, so either there was two questions or there were one question, does not matter. We had questions from EOCD. Question 27, largest geological park, not clear what exactly is the question, what are they trying to ask. आप अगर बता पाएंगे, I'll be able to change the question. Question 27, okay. Question 28, questions on Monetary Policy Committee. What exactly was the question on Monetary Policy Committee? वो question clear नहीं है. Somebody saying first geological park in India. First geological park in India. Okay, so this was the question. Maybe. Okay, let's see if there is any controversy regarding that. Questions on Monetary Policy Committee. Let's see if you can tell me what exactly is the what exactly were the statements given in Monetary Policy Committee question. Okay. Okay, let's move forward. Question 29. A question about National Center for Financial Education, NCFE, is a Section 8 not-for-profit company. So the question as per the students was that National Center for Financial Education is a dash company promoted by RBI, SEBI, IRDI and PFRDA. If that was the question, the answer is Section 8 not-for-profit company. Okay. How many members in NPC was the question. So somebody is saying that the MPC consists of dash members. That was the question. Okay, that clarifies it. NCFE is also clear. I hope you were able to answer it correctly. It was a logical question. NCFE financial education centers hai, so of course it has to be a not-for-profit company. That's how you could have come to the right answer. Question 30, ECLGS Emergency Credit Line Guarantee Scheme has been expanded by dash to rupees 5 lakh crore. That was the question according to some students. Okay.
करंट अफेयर्स का ये भी क्वेश्चन था. अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सेट अप एज per which section of Companies Act. Maybe this was a different question, maybe this was a part of NCFE only, but students ने ये अलग अलग बताए हैं. Okay. Question 32. In India, highest employment is generated in which sector after agriculture? अगर हम Statista देखें, then it is the non-financial services and after that it's construction. But students have not clarified कि भाई कौन कौन से options दिए गए थे उनको. One second. Okay. How much was given to one sector? 50,000 crore is clear. Okay. So this was still not clear, but anyways, we understand कि textile sector should have been the answer. Inflation in India in 2020. Inflation in India in 2020. There was a question regarding inflation. If you can clarify on what exactly the question was, it'll be much easier for everyone out there. Uh, okay, some people are saying one was IT as well, services. See, you can see here non-financial services comes after agriculture. देखिए ये फैक्ट्स है, ठीक है ना. हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, हम आपके इमोशंस पे बात नहीं करेंगे कि आपको लगता है टेक्सटाइल होना चाहिए तो टेक्सटाइल होगा. ओके, इफ़ देयर वाज an option of non-financial services, then that could have been uh, the, uh, the correct option. Okay, inflation in India in 2020. There was a question on inflation, but I don't know exactly what the question was. This is what the students have told me. If we can have a more clarity on the same, then yes, we can probably come to the answer. So some people are saying there was software and there was IT. टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, तो ये तो 6 हो गए भाई ऑप्शन. अगर फार्मा भी है तो इतने ऑप्शंस तो नहीं होंगे. समबडी थिंक आयरन एंड स्टील तो यहाँ पे आ गया. ओके, सो नॉट क्लियर. येस, नॉट क्लियर अगेन. It's all right. The questions might have been longer. That happens, but not as difficult as last time. Okay. Question 34. The Employee Provident Fund interest rate was cut to a decade low of dash in 2021-22 fiscal year. The answer was 8.1%. Okay. Question 35. This would have been question 35. 34 repeat हो गया है, so this would be 35. If X is 18 years old and wants to have a pension of rupees 5,000 when he retires under Atal pension, then how much should he contribute regularly under APY? I don't think it was an easy question. People are saying easy था और फिर वो skip कर देते हैं, but it was not an easy question. Why? Because अटल पेंशन योजना का एक चार्ट है जिसमें एक टेबल है जिसमें बताया हुआ है कि आप 18 साल के हो तो आपको इतना देना है, 20 साल के हो इतना देना है, 21 साल के हो इतना देना है. बहुत लंबा टेबल है. And we never pay heed to that table because it's nonsense. You don't have to remember the entire table कि मैं 28 साल का हूँ तो मुझे इतना देना है रोज़. Okay, but yes, that's what they asked. Something that we ignored. That's what they asked. Some people are saying 210, some people are saying 240. तो वो देखना पड़ेगा कि exactly answer 210 है या 240 है. But this is where the confusion is. Okay, M.K. Sharma is saying how RBI MPC ensures transparency in inflation. 3 reasons were given. Okay, how MPC ensures. What do you mean by transparency in inflation? Do you mean by inflation measurement? There is no law. It doesn't make any sense. Like transparency in inflation is not a sentence. It does not send across anything at all. Okay, 3 sentences were given. Let's look at that. Okay. Okay, let's move forward. Question 36. This would be 36. Let's assume that it's 35. We'll add one later.
Desh e-portal, E stands for, it's given nowhere, but I think it should be ecosystem because that's what it says everywhere. Okay. Could you correct me if you think that it's not ecosystem? I don't know what the options were in the examination hall. Question 36. Peacekeeping medals were given by United States to which country? Again, the question is not very clear. यहाँ तक questions थोड़े clarity कम है, उसकी वजह से समझ नहीं आ रहा है कि exactly student ने question क्या पूछा गया था. We can discuss them later as well. Question 37. Sex ratio in India in urban versus rural areas. ये options हैं. Rural में 924 per thousand, urban में 918 per thousand. If this was the question, these are the sex ratios in urban and rural areas. 38. When ये क्वेश्चन 37 आपका फेज़ 2 लेवल का क्वेश्चन है, जो कि मैं सेंसस में भी पढ़ा चुका हूँ और रेगुलरली हम पीआईबी में भी कवर कराते हैं. 1000 पीस कीपर अवार्ड टू साउथ सूडान. 1000 पीस कीपर अवार्ड to South Sudan. Okay, so now this question is complete. Question number 37, we are done. Phase 2 level question. 38. When is a bank customer eligible to be insured under DICGC for his deposits made in a bank? Options are not given, so we don't know क्या क्या options दिए गए थे, but there were some sentences, statements given, जिसके basis पे आपको बताना था कि bank customer eligible होगा या नहीं होगा. Somebody said there was a question on national monetization plan, but the question itself is not clear, इसलिए हमने खाली topic डाल दिया है. Question 40. What is the minimum net owned fund requirement for a public company to be incorporated as a Nidhi company? The answer is rupees 20 lakh. Okay, पूरा statement मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया है. How many beneficiaries are covered in Jal Jeevan Mission? The answer is 3.8 crore. Okay. Question 42. In which month in 2022 GST collection has crossed 1.5 lakh crore mark? The answer is April 2022, 1.68 lakh crores. Okay. After National Education Policy, what is the allocation for education in Union Budget 2022? The answer is 104,278 crore. 1,04,000 crore. Okay. One statement was liquidation. In which question are you talking about? When is a bank customer eligible? Probably talking about this. Liquidation. Okay. 1.5 lakh आया था, 1.68 lakh नहीं. Okay, so he's saying that instead of asking what is the latest collection, they asked what mark was crossed in April 2022. Maybe that would have been, but in short the question was about GST collection at the highest collection, the month. Both of them are important. Okay. After National Education Policy, what is the allocation for education in Unit 2022? 1,04,000 crore. Azadi Se, question 44, Antyodaya Tak interministerial campaign has been announced for now 90 days. Okay, the answer is 90 here. Question 45, Jharoka scheme has been launched in how many states? It's a pan-India program that will be held at 16 locations in 13 states and UTs as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. So the answer was 16 locations in 13 states. Somebody is saying 2 liquidation, 3rd merger. Let me go back. Okay. Option 2, merger. Question 38. Reconstruction or arrangement. Option 3, reconstruction or arrangement. Option 4, let's see if you guys can give me some more options. Amalgamation and merger हो गया यहाँ पे. Something else, 2 more options left. Tanya is saying 71 attempts only with 90% accuracy. 71 attempts
in GA or total? You have to tell me what exactly are you referring to. Okay, Jharoka scheme is done. Question 46. Sagar Mala program has a target of developing how many kilometers of inland waterways? The answer is 14,500 kilometers. 47. How much additional subsidies allocated to fertilizer sector by the government? Either this was the question or the question was in addition to fertilizer subsidy of 1.05 lakh crore, an additional amount of 1.10 lakh crore is being provided to further cushion our farmers. So the amount that was asked was either 1.10 lakh crore or 40,000 crore. Both are different. Okay, but a decent question, current affairs का question है. The Indian Air Force has unveiled a new initiative with the Indian Oil Corporation. What is it? There were probably statements given, but they have created an MOU wherein the Defense Ministry has, Indian Air Force along with Indian Oil Corporation has created a fleet card fuel on move, wherein the convoy of Indian Air Force can refuel anywhere on Indian Oil Corporation petrol pumps. Okay. Question 49. RBI has collaborated with which bank through UPI between two countries? The answer is Pay Now. The statement is given below. RBI and Monetary Authority of Singapore on Tuesday said they would link their respective fast payment services systems UPI and Pay Now to enable users to make low cost fund transfer between the countries. Okay. There was a question related to Bharat Bond ETF, but the question itself is not clear. Okay. Who's the next chairman of FATF and which country does he belong to? T. Rajakumar of Singapore. Anshumala only 81 with 90% accuracy. Any chance? Of course थोड़े से कम है. I'll be very honest with you because मैंने आपको कट ऑफ बताई है कितने तक जा सकती है, किस एरिया में रहनी चाहिए. Which country will provide an additional sustainable development aid worth 10 billion euros to India to support the latter's green growth plan till 2030? The answer is Germany. 53. How many members are there in OECD? तो OECD के दो questions हमने बता दिए. 38 members and when was it formed? Which of the following are not MPC committee assumptions in April 2022? I don't know if this was a question or not, but MPC से 3-4 questions हमने देख लिए हैं, तो आप एग्ज़ाम से पहले की MPC एटलीस्ट पढ़ के जाना ज़रूरी है, which was discussed in RBI 247 as well. Which organization does not work under Financial Stability Board? ये भी इसमें ऑप्शंस सही होने ज़रूरी हैं हमारे पास, तभी हम आंसर कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते. Okay, some student is saying in question 52, the country was not asked, the date was asked, the year was asked. Doesn't make any difference. हम लोगों को एरिया समझ में आ गया है, आपको ये भी समझ में आ गया है कहाँ से पूछा गया था. अब आप चेक भी कर सकते हो बहुत ईजीली. ओके. Which of the following is not a part of memorandum of a company? ये क्वेश्चन किसी ने बोला है कि MOA से पूछा गया है, but we are still not clear about this. Which of the following sector or area is not under the capital expenditure of the government of India? अगर आप बता सकें कि ये एग्जैक्टली क्वेश्चन था और नहीं था तो फिर क्या था. Bond yield was statement based. Financial Stability Board from which organization? Asim objective was asked. Perfect. ये हम clarify कर चुके हैं. Let's move to question 58. SBI Card signed a deal with which technology company recently? TCS. Question 59. Which is India's indigenous train accident system? Kavach. Simple questions. Which state Khadi Gramodaya Samyukta Sangh gave the contract of production and supply of the national flag? Karnataka Khadi Gramodaya Samyukta Sangh. This was the answer. Project Venus of ISRO is to be launched in December 2024. Question 61. This was the answer. Question 62. Cyclone Asani named by which country? The answer is Sri Lanka. Very simple. Question 63. COVID Champion Award has been bagged by which airport? The answer is Cochin International Airport. Question 64. Khelo India University Championship 2021 was won by which university? The answer is Jain University. Simple questions towards the end. Central Intelligence Agency has appointed Dash Nand Moolchandani as CIA's first ever CTO.
Question 66, National Forensic Science University comes under which ministry? Ministry of Home Affairs. Question 67, World Environment Day is observed on which date? The answer is 5th June. Okay, this was a little confusing as to what was asked. Asia's largest event on civil aviation, jointly organized by Ministry of Civil Aviation and FICCI at Begumpet Airport in Hyderabad, with which other airport? But I did not find any other airport involved here in the news. Maybe I've skipped something, maybe I've not. I don't know what the exact question was. Okay. How many DRTs presently functioning in India? 39. A very difficult question. As per IRDAI ICICI Lombard is the second largest general insurance company. So the answer is ICICI Lombard, second largest general insurance company. As per National Education Policy, public investment is to be raised from 4.3% to 6% of GDP. वर्ल्ड वाटर डे थीम भी पूछा गया था. होस्ट ऑफ एनवायरनमेंट डे वाज आस्क्ड, स्वीडन 2022. ओके, होस्ट ऑफ एनवायरनमेंट डे तो पूरी दुनिया में होता है ना. वर्ल्ड वाटर डे इज समथिंग दैट वी हैव नॉट येट कवर्ड. क्वेश्चन 77, इंडियाज मंथली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रिमेन्ड अबव $, डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021-22. द आंसर इज 40. ओके, तो हमने 71 क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर कर लिए हैं, 2-3 आपके एडिशनल आ गए हैं, तो 80 के पास हम इजीली पहुँच भी रहे हैं. ये सारे चैट बॉक्स में देख के मेरी टीम डाल देगी और आपको लेटेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा करेक्टेड PDF भी टेलीग्राम के थ्रू दे देगी. ओके. सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सेकेंड लार्जेस्ट ही हो गया, वैल्यूएबल एंड लार्जेस्ट इज द सेम. ओके, परफेक्ट. लेट्स मूव टू नाउ क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश. क्वांट में डिफ़िकल्टी लेवल और वो सब मैं तो आपको ब्रीफली बता देता हूँ. क्वांट में एज एक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टी लेवल वाज अ लिटिल हाई, बट ये देखा गया कि सेम एरिया से कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे, जो कि हर साल होता है. उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इजी को पिक आउट करके यू हैव टू सॉल्व दोज, और डिफ़िकल्ट को पिक आउट करके आपको साइड में रखना होता है. दैट इज़ हाउ यू क्लियर. तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चंस थे. ऑफकोर्स सिंपल इंटरेस्ट वाज ईजियर, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आप स्किप कर सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट वाला कर सकते थे. ओके. 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि जिसमें से कि 2 क्वेश्चंस ईजी थे और 3 डिफिकल्ट थे. तो आप ये 2 क्वेश्चंस करके आगे बढ़ सकते थे. यू जस्ट हैड टू स्पेंड सम टाइम ऑन फाइंडिंग दीज 2 क्वेश्चंस. ओके. नंबर सीरीज से देयर वर 3 क्वेश्चंस. 1 क्वेश्चन फ्रॉम पार्टनरशिप विच वॉज एन ईजी क्वेश्चन. नंबर सीरीज़ के भी स्टूडेंट्स ने बोला एक ईजी था, 2 थोड़े डिफ़िकल्ट थे. 3 DI के सेट थे, जिसमें से ईजी यहाँ हटा देते हैं. इसमें से एक ईजी था, 2 डिफ़िकल्ट थे. दिस इज़ व्हाट द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि 3 DI के सेट थे, उसमें से एक ईजी था, 2 डिफ़िकल्ट थे. एक केसलेट बेस्ड था, एक लाइन एंड टैबुलर फॉर्मेट में था, और एक सेलिंग प्राइस कॉस्ट वाला था. तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट वाला जो था, दैट वाज एन ईजी वन, दैट कुड हैव बीन डन ईजीली. एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से था विच वॉज ईजी. 1 क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस ईजी, एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम बोथ्स एंड स्ट्रीम्स ईजी. तो आपके 10-12 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए आसान जो आप खींच सकते थे, जिनसे आप नंबर निकाल सकते थे. एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन में, जिसमें लोकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, ऐसा कुछ था. मेंसुरेशन आपको पढ़ाते नहीं है, लास्ट ईयर भी देयर वाज 1 क्वेश्चन, दिस ईयर ऑल्सो 1 क्वेश्चन. आई थिंक उसको ना ही छूएं तो अच्छा है, बेटर रहेगा हमारे लिए. रीजनिंग पे आते हैं. तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन मुझे मिला एक्यूरेट, विच वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट से नहीं हुआ. वेरी एंटाइसिंग, इंसाइटिंग क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग है. 6 cars are parked facing north such that distance between each car is in multiples of 7. इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू कि 6 कुर्सियाँ रखी हैं नॉर्थ फेस करके, कार्स वार्स लगा के ना थोड़ा कन्फ्यूज़ कर दिया स्टूडेंट्स को. डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. ओके. अगर इफ़ यू टॉक अबाउट डेटा रीजनिंग एज अ होल, एज अ टोटल, देन देयर वर 4 to 5 लेंथी क्वेश्चन फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी. दीज वर लेंथी बट ईजी. सिलोजिज्म थे 4 से 5 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के थे, जो कि आसान थे. अरेंजमेंट्स के 10 क्वेश्चन थे. इसमें 5 क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट्स, 5 क्वेश्चन कार पार्किंग के, जो पहले अभी दिखा दिए मैंने आपको.
ब्लड रिलेशंस के 5 क्वेश्चंस का एक पजल था, और डेजिग्नेशंस का 5 क्वेश्चंस का एक पजल था, एंड फ्लोर्स का 5 क्वेश्चन का एक पजल था, विच वॉज सपोज टू बी एन ईजी वन. ओके. इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देयर वर 2 RCs. फर्स्ट वाज डिफ़िकल्ट एंड सेकंड वाज इजी एज पर द स्टूडेंट्स. First RC, catch study report on diet and land use in UK, and second RC was on CPI inflation. I don't know whether it was actually difficult or not, but ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं. EDMs पूछे गए थे, मेथड्स ऑफ मैडनेस एंड डेविल्स एडवोकेट. एरर आइडेंटिफिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिए टेस्ट के थ्रू भी. सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चंस थे, और सेंटेंस कनेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस थे. ओके. सो दीज वर द मेजर क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द एग्ज़ाम. जो भी आपको लगता है कवर नहीं हुए हैं, आपको पता भी लग गया होगा क्या क्या आपके एग्जैक्ट स्कोर्स बन रहे हैं. व्हाटएवर यू फील कि नहीं कवर हुए हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. आपको लेटेस्ट PDF भी दे दूंगा, आप एक्यूरेट एनालिसिस भी कर सकते हो. ओके. कट ऑफ की फिर से एक बार बात करें, फर्स्ट टाइम नहीं, फिर से एक बार अगर बात करें तो मैं वहीं अटकाऊँगा. उसके रीजंस मैं आपको बता देता हूँ. लास्ट ईयर 66 थी. मैं आपको मिनिमम इंक्रीज़ बता रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स वर बेटर प्रिपेयर्ड. तो 10 नंबर वहाँ से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, विदाउट इट गोज़ विदाउट सेइंग. ओके. लास्ट ईयर 122 थी, तो आप सोच लीजिए, तो 10 नंबर आपके वहाँ बढ़ गए, 76 हो गई है. GK वॉज ईजियर दैन लास्ट टाइम. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स वर बुचर्ड इन जनरल अवेयरनेस, तो 5 से 10 नंबर वहाँ पे आराम से बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स के. इंग्लिश वॉज वेरी ईजी. इंग्लिश तो लास्ट ईयर भी थोड़ा ईजी था, बट क्वांट वॉज कंपैरेटिवली ईजियर देन लास्ट ईयर, एंड सो वॉज रीजनिंग. यहाँ पे खेल था ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का, कि आप कौन से क्वेश्चन उठा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, रैदर देन स्कोरिंग अ लॉट. ओके. तो अगर 20 नंबर जोड़ दें, 66, 76, 86, 85 भी अगर लेके चलें, तो वहाँ तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी मेरे हिसाब से. जनरल की, अनरिजर्व की, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है. ऑफकोर्स आई एम नॉट गॉड. पेपर मैंने नहीं बनाया, पेपर मैं चेक नहीं करने वाला, पूरा पेपर मेरे पास है नहीं. तो नॉर्मल सी बात है कि जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, उसमें ±5 का तो स्कोप रहेगा ही रहेगा. ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है. बट लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोचने का कि 85 के आसपास कट ऑफ क्यों रह सकती है. क्योंकि आपके GK में 10 नंबर बढ़ जाएंगे. इट वॉज ईजियर देन लास्ट ईयर. स्टूडेंट्स वर हैड वर्कड वेरी हार्ड. और सेकेंडली पेपर वॉज ऑल्सो ईजियर एंड स्टूडेंट्स वर बेटर प्रिपेयर्ड, तो इसीलिए 10 नंबर वहाँ भी बढ़ सकते हैं. तो आई थिंक 85 के आसपास रह सकती है. लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली इजी था, इसलिए 66 लास्ट ईयर इतने बुरे हाल में भी गई थी, तो 85 के आसपास इस साल भी जा सकती है. ठीक है ना. चलिए, आई विल सी यू अगेन इन द इवनिंग. शाम को probably there will be a session at 8 or 9 which will be taken by Manish sir, Neha ma'am and चेतन सर, जिसमें कि वो आफ्टरनून सेशन का डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखेंगे. एक वीक में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, बट येस, प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज़ 2. इफ़ यू आर स्कोरिंग एनीवेयर अबव 80 के ऊपर आपका स्कोर आ रहा है, तो प्लीज़ वेस्ट मत करो टाइम. विनती है मेरी आपसे, अपनी लाइफ के साथ, अपने करियर के साथ ऐसे मत खेलो आलस के चक्कर में. बिकॉज ऑफ लेजीनेस डोंट प्ले विद योर लाइफ लाइक दिस. आज रेस्ट करो. फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशंस अगेन फॉर फेज़ 2. और 30th से मैंने एक दिन और एक्स्ट्रा दे दिया है स्टूडेंट्स को. 30th से आपकी रेल बनने वाली है. क्रैश कोर्स ऑलरेडी जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो चालू होगा ही, अलग से भी लॉन्च कर दिया है. इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, यू कैन वेरी वेल टेक इट फ्रॉम द वेबसाइट courses.anujindal.in. anujindal.in में थोड़ा बहुत वो चल रहा है अभी, काम चल रहा है, थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं, तो आज शाम तक या कल शाम तक वो फिर से लॉन्च हो जाएगी. बट यू कैन गो टू द कोर्सेज, लॉग इन सब कुछ कर सकते हो courses.anujindal.in में जाकर. ठीक है ना. प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन. चाहे आप खुद पढ़ो, चाहे मुझसे पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बट पढ़ो. क्योंकि ये जो 25 दिन बचे हैं, these are going to determine your future to a very large extent. तो प्लीज़ डोंट प्ले विद योर लाइफ लाइक दिस. ठीक है ना. अच्छे से पढ़ाई करो. ऑल द बेस्ट गाइज. टेक केयर. बाय बाय. आई विल सी यू अगेन.